ओके भूमिका, व्हाट अबाउट यू? आपका स्टोरी लाइन चला? Yes, sir. वो problem solved. Almost solved, right? Great. What about Aditi? Aditi was also fixing the same issue, right? Yes, sir. Actually, she's not here in Lucknow. She's gone home, so actually I'm not in touch with her. Yes. Lot of disturbance is coming. Yeah. So Bhumika, when are you guys supposed to be again together? I mean, classes कब से शुरू हो रही हैं? तो क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी. अच्छा, तो उन्होंने in middle of something छुट्टियां ले ली हैं, right? So we are having a yes, sir. तो हमारे फाइनल एग्जाम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक will be free. Fourth of April. Okay. Okay. So Rohit and Saurav. Saurav, I am muting you because a lot of noise is coming in the background from your end. If you want to ask something or communicate something, please type it on the chat panel. So Rohit, my first question is कि पहला सेशन तो आज हो जाएगा, कल दूसरा हो जाएगा, ठीक है? इन बिटवीन अगर मैं तुम लोग के सेशंस लेना चाहूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जो असाइनमेंट भेजोगे बेस्ड ऑन द रिव्यू कमेंट्स, हो सकता है कि आप लोग को रिवर्स करना पड़े, राइट? Saurabh, you were not there in the last session and last to last session. We actually discussed on the various parameters on which the PowerPoint can be improved. Okay, and we also had a discussion, individual discussion. Okay, I'm just unmuting you. Yes, sir. Saurabh, if so, what I can do is tomorrow, 3 o'clock, I'll have a session with you and Rohit, or else No problem. let it be 11 o'clock in the morning. Okay, सुबह सुबह करके खत्म कर देते हैं. Anytime, और anytime. उसके बाद मैं आपसे ऑन फोन आपका पीपीटी लेके बैठूंगा, ठीक है, और आपके साथ एक Okay. डिस्कशन करूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम Okay, आती sir. है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? Thank you. Okay, so I'm just waiting for Aditi to come. As soon as she comes, I'll just start off with the session. Okay. Sir, there is one doubt that I can ask. Tell me. Mr. Farooq. Sir, actually, initially we have scheduled only 7 sessions, but now we are conducting 8, I suppose. Initially 7, let me see. This is Rohit, right? Saurabh, sir, Saurabh. Saurabh. Yes, sir. Saurabh, tomorrow will be our last session, I think. Tomorrow will be the last one, sir, because I have attended 4 initial sessions. Yes, one more session I have kept because assignment दूंगा तो उसका review comment भी तो आएगा ना, वो कब करोगे? Yeah, but I just wanted to confirm what all sessions I have missed, because I have attended till Smart Art and Hyperlinking. Yes. After that, there was one session on storyline. There was one session on storyline. One more That I session. missed. Just after Smart Art and Hyperlinking, we had a detailed discussion on individual PowerPoints. That day I didn't take any session. Okay. Okay. From there, this chaos started. एक So session today, की वजह से दिक्कत हो गई. for today, it is basis for layer and trigger, right? Yes, layer and trigger. But मैंने पिछली बार बेसिक लिया था, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया था. सिर्फ इसलिए ब्रीफ में बताया था मैं क्योंकि फर्स्ट रीजन था कि कुछ लोगों का इंस्टॉल नहीं हुआ था.
Second reason, the storyline in itself is a new application. I don't want this switchover chaos to happen where everybody is doing sir समझ में नहीं आया या फिर कुछ नहीं हुआ. So I wanted a gap where you can keep your mind to the track. Yeah, fine. तो मैंने थोड़ा सा बेसिक दिया आपको, स्टोरी लाइन दिखाया कैसे क्या होता है, थोड़ा सा शोकेस दिखाया. आज मैं फिर से बेसिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है. फिर उसके बाद लेयर, ट्रिगर और असाइनमेंट पे जाएंगे, ठीक है. असाइनमेंट इज वेरी डिफरेंट थिंग, we'll do it later. Shyam Sundar Saha will not be able to join today just because of the reason today is off. Okay, so we'll see to it. Okay. Bhumika, can you just call Aditi and confirm if she is coming or not? So actually, I've already tried calling her, but her number is not reachable right now. Okay, her number is not reachable. Let me try. I think you can try. वो उसको आज के सेशन के बारे में पता था, राइट? हाँ हाँ, सबको पता था और मेल आया. Then also I have talked to her. Then I informed her कि मेल आ गया है. But after that, I couldn't think so. Trying the number, but it's not suitable. Yeah, so what you can do is, which browser are you using right now? Mozilla. So what you can do is close the session, close the browser, open the browser once again, delete all your previous history, okay, then try to log in, okay, and if possible try to contact Aditi also, because she is not coming. I am just contacting her. Bhumika is saying that her number is not reachable. It's going okay. Okay, so recent. Okay, recent news from Aditi that she is going to log in. Let me see.
Okay, guys, there's no point in spending more time. Let's start. Okay, just a second. Okay, okay, guys, let's begin. Uh, okay, so you guys can see my window. Yes, sir. Yes, sir. So let's start with storyline once again. You guys are able to hear me clearly, right? Yes, sir. Okay. So since all of you are now able to have run storyline on your system, I'll just begin once again. So initially storyline is different from PowerPoint first of all. Okay, PowerPoint is somewhat like a presentation tool. Okay, but storyline is an e-learning tool, which means that everything related to e-learning can be created or used here. So in storyline, what you see currently is story view. Okay, which means that it's just like in a play you have various acts. Okay, act 1, act 2. Okay, it's just like that. So if there is an act, if there is a scene which is totally different from another one, and only when a user completes one scene he should jump to another, we can create various different scenes. Okay, so as you can see here, what I'll do is I'll just create a new scene to show you how it is done. I can create a new scene by clicking on this new, by going to first home, then clicking on new scene. As you can see, an untitled scene comes. Okay, now if I preview this entire project, okay, it will take some time. So as I said that in storyline multiple number of scenes can be there, but which scene to run first, that is the main question. Okay, so suppose you have 5 or 6 screens in each scene and you have multiple scenes, so there are 4 to 5 chapters in a course, and for every chapter you are creating a different scene, but which chapter to run, you have to tell storyline. Okay, let's see what happens right now. Okay, so now you can see that I added one scene, but it is not playing as the first scene. I have something else that is playing right now. So how to make that scene as starting scene? Okay, आपने न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़े होंगे, उसमें एक कवर पेज होता है, right? Yes. So to make that, make this untitled scene, that is my newly created scene, as first scene, I'll just click on this button, set as starting. Okay, now you can see a green flag appears here on the untitled scene.
Can everybody see it? Yes. Yes. Hello guys. Yes, sir. Okay. अगर आप लोग को लगता है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, आप लोग चैट पे ही रिस्पॉन्ड कर सकते हो. I have a question or I can see it when I ask the question. It is just to make sure that you guys are there, because due to connectivity issues, it may happen that I am not able to reach to you. Got it? Okay, sir. Just a second, guys. Okay. Now, what I am seeing right now is it's story view. Story view means an eagle's eye view, bird's eye view, whatever you say. कि आप कितने scenes आपके पास हैं, कौन सा scene किससे connected है. So right now I have scene 2 and scene 3 connected. I mean there is some hyperlink that is running from scene 2 and going to scene 3. Okay. So for example Yes, this. sir. So this screen has a trigger which makes the player means the system to jump from 2.8 to 3.1. We'll discuss that later. Now I want to create something. ये तो मैंने देख लिया कि मेरे पास इतना सब कुछ है, ये सीन्स है, वो सीन्स है, ठीक है. मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कैसे क्रिएट करूँ? So the first thing that you do is double click on this. As soon as you double click, आपके पास एक इंटरफेस आएगा जो कि लगेगा अरे ये तो पावर पॉइंट है. If you don't view this right hand side, okay. So barring this right hand side, everything is like PowerPoint. Okay. Now some things to follow. Today we are going to discuss about layers, triggers, objects, etc. etc. Okay. Some things to keep in mind. ओके. उसमें एक स्क्रीन सिंगल ब्लैंक स्क्रीन होगी, उस पर आप डबल क्लिक कर दो तो आप स्लाइड व्यू पे आ जाते हो. ओके. So I'm starting after that. Okay. Now my first target is to achieve trigger. Okay. What is a trigger?
A trigger is, cause and effect. Cause is something कि ये situation हो, if it happens do this, if it happens do this. Okay, so a very simple trigger is, so for example I am asking a quiz to my learner. So this is a quiz, okay, and I am inserting two buttons here. To locate the button, go to insert tab. From right hand side you will see the fifth item as button. First is preview, second is mouse scrolling panel data entry all clubbed together, third is marker, fourth is hotspot, and fifth is button. I choose a radio button. So let me tell some differences about radio button and checkbox. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, राइट? आप सभी ने कैट का एग्जाम दिया होगा. Okay, so if you want to select only one answer from the given options, you select the radio button. Okay, if there are multiple options that are correct, you have to give the check boxes. So let me create a question here. Check box. Okay. Question. Okay. Now, what I have done is inserted a text box and typed in it, this is a question. In the options, I am giving the first option as correct answer just to verify. Okay. Now I am adding another button. Rohit, are you able to hear me right now? Okay. So I'm just adding another button here and naming it as incorrect. Okay. Now correct incorrect तो हो गया, लेकिन इनको चूज करने के बाद मुझे सबमिट भी करना होगा क्वेश्चन, करेक्ट? Yes. Okay, so in that case what I can do is I will just create another button, okay, which says submit. Now guys, submit करेंगे तो respond भी करना पड़ेगा, correct है या incorrect है, right? Yes, sir. In that case we come to layers. Okay, so layer, what do you mean by layer? What is the term, what does the term layer, okay, trigger a visualization in your head? Layer होता क्या है? Okay, लेयर इज एक परत होती है, आप बेस पे कुछ और होगा लेकिन उससे अगर कोई चीज ऐड करते हो दैट इज अ लेयर, राइट? सिमिलरली इस क्विज, ये क्विज मेरा बेस है. भूमिका, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, I'm just unmuting Aditi as well. Saurabh, I'm sorry I'm not unmuting you just because some background noise is coming constantly. Okay, if you want to communicate you can use the chat panel. Okay, so this is, I mean, आप लेयर का डेफिनेशन तो समझ गए, परत होती है. दिस इज माई बेस, दिस इज माई क्विज. अगर मैं इसको करेक्ट और इनकरेक्ट दिखाना चाहूंगा तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू पुट अ चेक मार्क, a tick mark in front of the correct answer and a cross mark in front of the incorrect answer, right? Let's do this with the help of layer. So to add a layer, आप bottom right corner में जाओगे तो आपको एक सेंटेंस दिखेगा dim non selected layer.
उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे. The first option is add a layer, new layer. Okay, let's click on that. Once you click on that, what you can see is कि untitled slide का जो layer है उसके just ऊपर एक untitled layer 1 करके आ गया. For our reference, what we will do is we will rename this layer. To rename, what you can do is right click and press on rename. Okay, we will rename this as correct. ठीक है. So हमारा टारगेट क्या होगा कि अगर करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और सबमिट किया तो करेक्ट लेयर पे चलते. सिमिलरली अगर उसने गलत ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इनकरेक्ट लेयर पे चला जाए. ओके ओके. So to do this, what we will do is we have to put a trigger. See, if this happens, go to this, right? Sure. So let's put a trigger then. To put a trigger, what you can do is click. अच्छा, सबसे बात कि ट्रिगर किस पे पुट हो. आप किसी चीज पे क्लिक करें तब ये इवेंट अक्सर हो. ओके, वो कौन सी चीज होनी चाहिए इस स्क्रीन पे जिस पे क्लिक करने से इवेंट अक्सर हो. सबमिट. सबमिट, एग्जैक्टली. सो हम सबमिट पे गए. नाउ टू पुट अ ट्रिगर, गो टू इंसर्ट. सेम बटन के जस्ट लेफ्ट साइड में ट्रिगर का ऑप्शन है. क्लिक ऑन. विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स की देखिए इतने सारे ऑप्शन है आपके पास. एक्शन, स्लाइड, देन ऑब्जेक्ट. वी विल स्टडी देम वन बाय वन. एडवांस लेवल जब आप ज्वाइन करेंगे वन बाय वन. एंड सृष्टि, instead of going into the PowerPoint details, you can start off with Storyline because it has immense features. It is too powerful. And the third thing is आप IS और ID इसमें आराम से सीख सकते हो. ठीक है. और related to this, what I'll do is I'll just give you a link, okay, which is very helpful for beginners as well as advanced level. That is community.articulate.com. Okay, so this is a website of Articulate. ये Articulate customers का एक platform है where each and every person communicate to the Articulate team as well as deposit their reference material here for download. पहली बार में आपको देखने से बहुत ज्यादा ये overwhelming लगेगा. What I would suggest is first go through the tutorials, okay, then after you can go through the forum. Okay, now let's go back to our topic. हमें एक ट्रिगर लगाना था सबमिट पे. ठीक है, let's make that happen. Without going into details, I'll just go step by step कि आप ये करो. ठीक है. We will explore several other options in the assignments that I will give to you. ठीक है. Okay. Now, when I click on action, it says what is action? Action में ये करना है मेरे को, किस स्लाइड पे करना है. ये तो खैर चेंज हो जाता है जैसे ही आप पहला एक्शन चूज करते हो. एक्शन चूज करते हो उस हिसाब से आपके जो वेरियस अदर पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं. तो लेट्स सेलेक्ट द एक्शन फर्स्ट. द एक्शन इज शो लेयर. तुरंत उसके नीचे का पैरामीटर चेंज होकर लेयर हो गया. व्हाट विल बी द लेयर नेम? फर्स्ट हम लोग करेक्ट स्लाइड पे देंगे. ठीक है. ठीक है. Show layer correct when user clicks on submit, but this should be selected, right? Correct answer. Okay. So click on, there is a small hyperlink which says show conditions. Click on that. This is the condition panel. So let's go through this trigger wizard once again. Action show layer.
and show the layer correct when user clicks on submit button on condition. Okay, the condition is blank now. Now let's add a condition. To add a condition, click on the green plus icon. Okay. Now there are 3 lists of things that are available for condition. My condition is shape. Radio button is a shape. So let's go through once again. Show layer correct when user clicks, submit button when shape, submit button 1 correct answer is equal to selected. Plain English में हो गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. Okay. Now we see it forms a sentence. ठीक है, आप इसको सेंटेंस फॉर्म में भी समझ सकते हो, एल्गोरिथम फॉर्म में भी समझ सकते हो, जैसे भी समझना चाहो, डजंट मैटर. ठीक है. नाउ सिमिलरली हमने करेक्ट आंसर का तो बना लिया, अब इनकरेक्ट आंसर का भी बना लो. ओके, तो हम एक और ट्रिगर ऐड करेंगे. टू ऐड अ ट्रिगर, देयर इज अ ट्रिगर पैनल. उसके नीचे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू कैन क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, create a new trigger. Okay, again action show layer, this time incorrect when user clicks submit. If incorrect is selected right now, correct. Okay, now let's go to the particular layers. As I said, layers base पर काम करती है, so the base you can see on every layer. Even while previewing, even while seeing it in a published format, you can see the transparency. Of course, you can reduce the transparency, you can increase it, you can hide it. There are various features available here. आप उन फीचर्स को, जैसे अनटाइटल्ड स्लाइड पे मैंने क्लिक किया या फिर करेक्ट आइकन पे, तो जस्ट उसके साइड में एक सेटिंग्स का बटन आ जाता है विच हैज प्रॉपर्टी. उस पर क्लिक करेंगे तो वेरियस सेटिंग्स आपको मिलेंगे. आई वांट यू टू एक्सप्लोर दैट, अदरवाइज वी विल एक्सप्लोर दैट व्हेन यू ज्वाइन हियर. ओके, और लेवल बाय लेवल हम लोग चलेंगे, अभी फिलहाल वो लेवल नहीं है. ठीक है, तो हम करेक्ट पे गए, उसी तरह से इनकरेक्ट पे गए. यहाँ पर मैंने सबसे पहला ऑप्शन टिक कर दिया कि प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम क्लिकिंग ऑन द बेस लेयर, नहीं तो वो फिर से वापस सबमिट पे क्लिक कर. राइट, okay. Now let me add some ticks and crosses. Correct, add picture. This is correct, right? Correct. My template that I'm using, don't worry about it. Similarly on incorrect. Okay, now I think we are ready for a preview. Let's preview it. Now this is a question. We have correct answer or incorrect answer. Let's click on correct answer first and click on submit. Correct. Got it? Yes, yes, sir. अगर इसको कोडिंग से बनाते तो हमको बहुत टाइम लगता है. अगर पावर पॉइंट के थ्रू बनाते तो हमारी 3 स्क्रीन वेस्ट होती, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीन और 2 लेयर्स पे हम लोगों ने आराम से इसको बना दिया. एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, this is a basic application, very basic application of trigger and layer. So what I am going to show you now is how we can use this trigger and layer
to create a self check along with a hint. Okay, थोड़ा सा एडवांस है, bear with me. अगर कहीं confusion है, you can easily ask me whenever you want. Just a second. So like if we have 4 options, so there is put in 4 layers. Yes, so पहला ऑप्शन का ट्रिगर करेक्ट पे जाएगा, जो भी करेक्ट वाला है, बाकी 3 इनकरेक्ट पे जाएगा. ठीक है, सो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आई हैव 4 ऑप्शंस हियर. लेट मी क्रिएट 4 ऑप्शंस. There are 4 options here. 3 of them are incorrect and 1 is correct. Submit. मैं चाहता हूँ इनकरेक्ट वाला, मैं भी इनकरेक्ट के साथ ही चेक करूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो कंडीशन था, बटन टू इनकरेक्ट स्टेट इज सेलेक्टेड. लेट मी एडिट दिस. ठीक है, क्या एडिट होगा? सबसे पहला है बटन टू इनकरेक्ट स्टेट इज इक्वल टू सेलेक्टेड. ठीक है, फिर एक और कंडीशन ऐड करेंगे. When we add another condition and slash or gets activated. Okay, so let's form a statement here once again. Show layer incorrect when user clicks on button 3 submit on condition button 2 incorrect state is selected. ठीक है, और button 3 incorrect state is selected. Sorry, button 4 incorrect state is selected. Button 3 is now submit. Okay. Similarly, button 5 state is selected. और क्यों लगा? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. This or this or this. Okay. Equal to selected. Incorrect. Let's preview this. Now let's click on this or this or this. मैंने किसी पे भी क्लिक किया, एंटर. Got it? Yes. Okay. Okay, so I was going to showcase you. Let me first. Okay, no problem. Because we don't have to do this. So let me show you what else we can do with this. A very brief idea. Features के हिसाब से हमारे पास अनलिमिटेड वेज है उसको यूज करने का. Let's see how we can use it. Remember guys, कि layer trigger, ठीक है, what I have shown you is just the tip of the iceberg. Triggers have, you know, मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, कम से कम 17-18 एलिमेंट्स है, प्लस लेयर में कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं. उन सारों को मिला के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि आप कुछ भी टैकल कर सकते हो ई लर्निंग में. ओके, so let me just see which screen I might show you. Yeah, it's a good example. Let's start with this. Okay, how would you introduce yourself? I mean, this is from savings account sales simulation. This is a salesperson. How would he introduce himself? And there are series of sentences given. You have to arrange them in a proper sequence here. Okay, from top to bottom. So the first sentence will be obviously, good morning sir, I'm Ram Kumar from Smart Bank. Then the reference and what is the purpose of the visit. You guys got it? Yes, sir. Now let's submit.
मैंने थोड़ा सा साउंड इफेक्ट डाल दिया है ताकि अच्छा लगे। So here is the correct option and the correct series of response. Now मैंने अभी वेरिएबल डिस्कस नहीं किया है, तो the best part of storyline is use of variables. Okay, I'll just show you how I have used them. Okay, so I have created 2 attempts for that person. I have told them that hey, you have 2 attempts here. अगर आपने 2 बार गलती कर दी मतलब कि कस्टमर समझ गया कि आप बेवकूफ हो, वो चला जाएगा. Also I have given him some triggers, some markers on the screen, ये बताने के लिए कि आपके पास इतनी लाइफ है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो गेम खेलते हो तो आपकी लाइफ आपके सामने रहती है कि हाँ मेरे पास 5 लाइफ है, 2 लाइफ है, 3 लाइफ है, या फिर 70% मेरी लाइफ लेवल कम हो गई. Similarly here I have given him an option to see his life. Just a second, let me publish it completely so that I can show you. आप सभी के एग्जाम्स खत्म हो गए, राइट? Okay. Saurabh, you have any questions? Let me unmute you and see. Yeah, Saurabh, do you have any questions? No, sir. Okay. Everything is clear to everybody? Right, sir. Yes. Because मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट असाइनमेंट देने वाला हूँ. मैं इजी असाइनमेंट देता, ठीक है, बट अब जब इतनी मेहनत हो रही है ट्रिगर्स बताने में. In the previous chapter, we covered the. Okay, so अब जब इतनी मेहनत हो रही है बताने में, I don't want you guys to repeat this stuff when you join here. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है इससे रिलेटेड है, I am ready to discuss that. बट मैं चाहता हूँ when you join here, you start working on this, right? Or at least start from 100 paces later. मतलब कि आपको बेसिक्स आती हैं, आप एडवांस जानना चाहते हैं, राइट? तो बी केयरफुल गाइस कि मैं असाइनमेंट तो दूंगा, लेकिन असाइनमेंट में 2 लेवल हो सकते हैं, ठीक है? पहला लेवल ये हो सकता है कि वो आप आराम से क्लियर कर जाए, बट दूसरा लेवल होगा कि इसको आप बेटर कैसे बना सकते हो, ठीक है? ओके, लेट मी लोकेट द स्क्रीन. Okay, this is the situation. Let me see where it starts. Okay, so I have got some leads. So see how you can show the leads here. So here, what I have done is I have discussed the concept about how to collect the lead. Okay. Now after getting lead, I have a visiting card. I have a registration list. So I have conducted a help time and I have got a list from there. My first task is to arrange that list in Excel sheet. I have done that. Okay. So it says you have entered the following data. If the data entered by you matches with what's given below, okay. Now I am going to visit Mr. Tarun Mehta, manager in a telecom company. He lives in a premium housing society. Okay. Now here I have given him this cross mark. Track your number of attempts on the top right corner of screen. In this simulation, if you answer incorrectly more than 2 times, you will fail to convert your lead. Let's try. मेरे पास कितने अटेम्प्ट रिमेनिंग है? 2. मैंने 1 अटेम्प्ट गलती कर दिया. तुरंत बजर साउंड आएगा, उसके बाद वो बता देगा मैं इनकरेक्ट. ओके,
attempt similarly 1. Got it? Yes. Now again, okay, now here is okay. So I suggest my own order. Click here for head. Excuse me, sir. Hello. 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 Office, and the current banker is 2 kilometers away from Mr. Mehta's home. I click on go back, and here I am. Got it, everybody? Rohit, I'm not able to hear you. Can you speak a little bit louder? After the first attempt, whatever you did, we could not hear anything. After the first attempt was over, right? When Okay. it showed up person. So Saurabh, right now you are able to hear me clearly, right? Just type in yes or no. Okay. So I am now discussing about variables and triggers both clubbed together. So remember, all the features in storyline can communicate with each other. तो आपके पास अगर 3 पॉइंट होते हैं, ओके, तो आप 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, राइट? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसी तरह से ये भी फॉलो करता है. तो मैंने ट्रिगर और वेरिएबल एक साथ लगाया. So here I can see that I have attempted 1 wrong and 1 cross is left. Attempts remaining number 1. This is variable. Way I am moving my mouse here and it is appearing, this is trigger. Okay. When I am clicking on the 4th option, suggest your answer, and this is appearing. This text box is appearing. This is trigger. I'm clicking for a hint. I'm coming back. This is trigger. But when I type something, okay, submit it, and this the text that I have typed appears here. This is variable. But I have come to this screen just because there was a trigger for correct response. Got it? The variable is available just below the insert column. No, I'm not able to hear you. Can you speak a little bit louder or type in? The variable column which you brought here, we can get it from insert menu, right? We can get it from insert menu, right? Yes, yes. I will get into variable detail later. Okay, variable is a little bit tricky. ठीक है, insert menu में text box आता है. जैसे ही आप text box लाते हो, story line में एक variable automatically create हो जाता है. Okay. Okay, don't worry about that. I just wanted to say कि मैंने ट्रिगर पे क्लिक किया तो करेक्ट आंसर पे आया, लेकिन वहां पर कुछ मैंने ऐसी वैल्यू दी थी जो मैं यहाँ पर ला सकता हूँ. So for example, I want to customize my course. Okay, this salesperson that I'm talking about is the name that you have entered. Got it? Yeah. And this person is, communicating him, referencing to the name that I have entered. For example, test. मैं मान लेता हूँ कि यही नाम इसने दिया है, ठीक है, ये रेफरेंस ले रहा है इसका. So this is how layer and trigger work.
Got it? Any confusion? Seems to be very difficult. Yeah. It seems to be very difficult. Don't worry, it is never difficult. See, first thing is कि आप अभी मतलब उस environment में नहीं हो, ठीक है? आप एक ही दिन में 3 बार इसको सोचोगे तो आराम से आ जाएगा. This obviously needs practice. Okay, practice makes a man perfect. यहाँ पे how do we define a variable? Yeah, I'll tell you. Although we have a different session for that, but I'll tell you right now. We go to insert. Okay. Let me first select another project because this is very valuable one. I cannot afford to mess around with it. Okay, let's start afresh. This is a fresh screen, right? If variables are there, so let me take another project, new. Okay. See, whether you have a variable or not, right now you can see it by clicking on the X button. You can see that X button on triggers panel on right hand side. Rishti, can you locate it? Okay. So if we have a new project and we click on X button, we see there are no variables under name, type, default value and use count. Okay. Let's create a variable. Instead of creating a variable, let's create something that automatically creates variable. मैंने आपको text box दिखाया था, right? So to insert that text box, what you can do is go to insert, then data entry, choose text entry. Do not use numeric entry right now. There are some complications of its own. ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि बड़ा दिखे और सबको दिखे. नाउ जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ट्रिगर्स में एक टेक्स्ट एंट्री ट्रिगर आ गया. सेट टेक्स्ट एंट्री इक्वल टू टाइप वैल्यू व्हेन द कंट्रोल लूजेस फोकस, which says that whatever I type here, save that value in a variable called text entry. Okay, let's see on variable panel एक नया text entry आ गया है. दिखा सबको? सृष्टि आपको दिखा? बाकी सबको दिखा? Yes. Okay. Now what I can do here is, लेकिन मुझे ये text entry में नहीं चाहिए, ठीक है? I'm going a little bit deeper right now. Okay, if anybody finds difficulty in understanding this, please tell me so. Okay, I'm just showing you how variable and trigger are interlinked. Now if I click on this trigger, if I double click on this trigger, it opens. Set variable text entry. Instead of that, I can assign another variable. So for example, I create a new variable here. To create a new variable, you click on the X button. There is a create new variable option at the bottom leftmost button. Name, let me take it as name only. Type text, keep it text, value nothing, and OK. Now what I want to do is, instead of filling the value of this data
in text entry I want to fill the value in name. Okay, done. How we can do this? We click on the trigger, set variable name. Krishti, got it? Sorry, not it. After we have added a new name. Yes. So what we can do is object trigger आपको दिख रहा है, right? Text entry. Yes, sir. उस पर डबल क्लिक कीजिए, सेट नेम, उस पर सेट टेक्स्ट एंट्री लिखा होगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए तो ट्रिगर विजर्ड खुल जाएगा आपके साथ. Okay. उसमें सेट वेरिएबल इज इक्वल टू नेम कर दो, बस दैट्स इट. ओके, नाउ आई क्रिएट अ लेयर. ठीक है, फॉर्मेट द बैकग्राउंड है वाइट ताकि मुझे हाइड ऑब्जेक्ट्स ऑन बेस लेयर कर दो. डोंट गो इनटू डिटेल्स राइट नाउ, मैं बस आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए. Okay, now here what I'll do is I'll insert a text box. ठीक है, and in this text box I'll insert the variable name. तो मैंने क्या किया, बेस लेयर पे डेटा लिया और लेयर 1 पे डेटा, वही डेटा आपको दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, मैंने एक बटन बनाया, शो लेयर एंड टाइटल 1. Now let's see what happens. So here I write okay. Now after I write this, I click on this button and see what happens. I go to this layer and here the same data is reflected. Got it? Yes, sir. Some limitations here, you cannot manipulate the data. For example, you cannot add a text into it or remove a text. It is quite difficult and complex. We are able to tweak some things out of it, but it is it's a headache. So let's stick to the basics first. Layers and triggers basic is complete now. Okay, what I want you to do is, apart from the assignment, go through each and every feature that is available, create your own problems, and आप पहले देख लो layers में क्या क्या available है, triggers में क्या क्या available है. Okay, trigger में available है change state when variable changes. Okay, तो एक data entry रो, बटन का कलर चेंज करो, we can do that. Okay, I'll tell you how to do this. हाँ, tell me. Okay, no problem. Since you are not in the session right now, I give you the liberty, okay, to view the visuals and then after try it. Remember guys, Aditi, Bhumika, Rohit, Saurabh, even Krishti, किसी भी point of time पे कोई भी error या फिर कोई भी problem आती है, story line is slightly at a higher learning curve, but it is not at all difficult. ठीक है, डिफिकल्ट वो होता है कि आप नासा में हो और आपको एक रॉकेट बनाने को दिया गया है और एन वक्त पे उसका इंजन फेल कर गया. ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, ठीक है. मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया, बट वो डिफिकल्ट होता है. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. आपने अभी सीखा ही नहीं है इस चीज को, तो डिफिकल्ट नहीं हो सकता. आई अर्ज यू कि आप पहले सीखो, उसको समझो, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. आज तक जितने लोगों ने भी स्टोरी लाइन पे काम किया है, किसी ने बोला नहीं है कि स्टोरी लाइन इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उसने बोला है फन एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, इवन द मोस्ट far distant person from production, he prefers storyline instead of PowerPoint.
Got it? Yes. Okay. तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उसके बाद मैं सेशन क्लोज करूंगा. और let me introduce you to states. आपने अभी एक एग्जांपल में देखा था कि मैं फोर्थ ऑप्शन पे जब क्लिक करता हूं तो कुछ अनहाइड हो जाता है, राइट? करेक्ट? Okay, let's do that. Remember, in storyline, every object comes with a state. So, for example, I'm removing this. I'm giving you this example just for the sake कि आप जब विजुअलाइज करो तो इस चीज को भी माइंड में रखते हुए चीजों को विजुअलाइज करो. दिस इज वेरी नेसेसरी व्हेनेवर आई गिव यू एन असाइनमेंट और यू डू अ जॉब. ठीक है? Whenever an object is created in storyline, it has certain states. How to view those states? जो आपकी स्क्रीन है उसके जस्ट नीचे टाइमलाइन स्टेट्स एंड नोट्स लिखा होगा. You can click on that. Don't go into timeline right now. Animation we will do it later. अगर आपको जाना ही है तो आप ये समझ सकते हैं ये टाइमलाइन है 1 2 3 4 5 6. कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ अपीयर होगा आप इसको डिसाइड कर सकते हैं. मतलब मैंने अभी क्या किया, रेक्टेंगल 1 1 सेकंड पे आया, रेक्टेंगल 2 आई मीन ब्लू कलर का बटन 2 सेकंड पे और रेड कलर का बटन 3 सेकंड पे. सेकंड टैब इसका है स्टेट्स. इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारी स्टेट्स आएंगी. घबराओ मत, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक. मैंने रेक्टेंगल 1 पे क्लिक किया, इसकी एक नॉर्मल स्टेट आई. ठीक है? फिर मैंने एडिट स्टेट किया और इसकी एक कॉपी बना ली. इस स्टेट का नाम दे दिया रेड. ठीक है? और इसकी एक कॉपी बना ली, इस स्टेट का नाम दे दिया ब्लू. और इसको मैंने कलर कर दिया रेड में. तो एवरी स्टेट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट. व्हेनेवर आई क्रिएट अ स्टेट आई क्रिएट अ सेपरेट ऑब्जेक्ट. मैं इसकी जगह स्टार भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ. हाउ डज दिस हेल्प? लेट्स सी. मैं इसका बस कलर चेंज कर देता हूँ एंड एवरीथिंग इज ओके. हियर वी गो. Now I click on done editing states. If you find this difficult, we can discuss this later as well. Okay, don't worry about this. I'll just create a trigger which says, just a second guys. Okay, so now it says now I want to do like this. मैं जब भी रेड बटन पे क्लिक करूं ये बॉक्स रेड हो जाए, मैं जब भी ब्लू पे क्लिक करूं ये ब्लू हो जाए. इज दिस पॉसिबल? सुनाई नहीं दे रहा है रोहित? आप रेड पे क्लिक करोगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा. Exactly. So let's do this. I'm just removing all other states from here. Now here I'm adding a trigger on red button which says, just a second, which says
change state of rectangle 1 to red when user clicks on button red. Okay, similarly on blue, change state of rectangle 1 to blue when user clicks on blue. Now let's preview it. Since I timed this, तो एनिमेशन देखो टाइमली आया है. मैं इसको रेड पे क्लिक किया तो रेड बॉक्स हो गया, ब्लू पे किया तो ब्लू बॉक्स हो गया. गॉट इट? कई सारे फीचर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार ट्राई करके देखो. ठीक है, so I'll conclude my session today here. Okay, what are the key takeaways? Layers, triggers, a small part, a very small part of variables and states. Got it? Okay, any confusion guys? Sure. So for Aditi, Bhumika and Srishti, next session is on 14, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, for Rohit and Saurabh, let me unmute Saurabh as well. Just a second. For Rohit and Saurabh, the session will be, next session will be tomorrow. Am I correct? Yes, sir. Okay. So कल के सेशन में आज का अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है, प्लस आज रात को जो मैं असाइनमेंट दूंगा आप उसको कंप्लीट कर लो. ठीक है? ओके. देन आफ्टर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फिर से मुझसे possible to complete it? That's what I'm worried about. What I can do here is give an assignment today and take it back on third. Will you be able to do it? या फिर No, sir. कब तक चाहिए तुम लोग को टाइम भाई? Sir, actually, on third it's my convocation, so I'll be returning home after the convocation. Okay. I'll So submit on fifth or so. so let's do something. Okay. So let's merge since but it is not better. It is better if we don't merge the assignments here. So even I do not have this storyline. I have to download it and You don't have the story. I have to go through the earlier session. No, so I didn't attend the last session. I don't know how to work. And I have to go through the earlier sessions as well. Okay, so in that case, in mid of these confusions, what I can do is I can combine tomorrow's session and today's session for an assignment. Will that be okay to you guys? Yeah, that will be fine. Yeah. But again, Yes, sir, that will be okay. Smart Art का assignment बचा हुआ है PowerPoint पर, so you guys have to submit 2 assignments. Okay. Okay, sir. रोहित सौरभ दोनों समझ में आया? Yes, sir, fine. PowerPoint का एक assignment Smart Art से which I will give you today, and storyline का एक assignment which I will give you tomorrow. Since it is a Smart Art assignment, I don't think it will be a trouble for you. On which page? Smart Art assignment. So when do we have to submit a smart art assignment? You have to When do submit we your need to submit it? say 4th or 5th. Will that be okay? Yeah, fine, sir. Oh, okay. Before 10th, I want these assignments to be completed. Fine, sir. Okay. ठीक है. And for Aditi, Bhumika and Srishti, what I can do is I can give you an assignment separately. ठीक है? ठीक है, but it will take some time because इनके लिए फिर कस्टमाइज अलग करना पड़ेगा, आपके लिए अलग करना पड़ेगा. Monday और Tuesday I will be able to because अब आपका डायरेक्ट असाइनमेंट है 14th को, करेक्ट? Yes. सेशन है 14th को.
ठीक है. So, can you get the recording of the previous session as well? एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है, लास्ट के 2 सेशन 3 सेशन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास. आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट ड्यू टू बैंडविड्थ इशू. ठीक है. सर इनफैक्ट अगर इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाए हाँ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग even if भी you don't get the last 2 sessions. यार एक सेकंड, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. लेट मी सी द रिकॉर्डिंग. यस इट इज रिकॉर्डिंग. 1 घंटा 10 सेकंड 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है. डोंट पैनिक. ओके. इस बार की रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ अभी कन्वर्ट करके. यार देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, वी गाइस हैव टू वर्क अ लॉट ड्यू टू दिस ब्रांच सेल्स ऑफिसर प्रोग्राम. आप लोगों ने क्लिप के फेसबुक वाले पेज पे देखा होगा. So we had to create some round about 40 chapters in 4 weeks of time. So normally हम लोग एक chapter 1 महीने में complete करते हैं. So lot of customization was there. We burnt our midnight oil, and now we are in a situation where we have completed round about 70% of the thing. Rest 30% of the thing will be completed in the next week. तो इसी वजह से I was not able to convert this, because convert करते समय system totally goes slow for at least an hour or so. और यहाँ पर 1-1 मिनट में हम लोग की जान निकल रही थी. So I'll be able to convert this file today. Okay, today's session 1 घंटे में अवेलेबल हो जाता है सर्वर पे, वेबएक्स के सर्वर पे सिस्को के, और उसके बाद मैं 1 घंटा निकाल कर मैं इसको कन्वर्ट करके अपलोड कर देता हूँ. आज का सेशन फॉर श्योर, बिकॉज कल के सेशन के लिए रोहित और सौरभ को आज का सेशन का रेफरेंस चाहिए होगा. अपलोड करके मैं आप लोग को दे देता हूँ. ठीक है. Okay. और कुछ More. Okay. Nothing, sir. रोहित, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. प्लीज टाइप. Okay. For tomorrow, रोहित 11 प्लीज, o'clock. आई एम नॉट एबल टू हियर. आई एम सीरियसली नॉट एबल टू हियर यू. प्लीज टाइप. वन मोर, आपके असाइनमेंट के बेसिस पे आप लोग स्कोरिंग भी हो रहा है. आप लोग को पता है ना, स्कोर को लीड करेगा वो एक सरप्राइज गिफ्ट पाएगा. सो गिव योर बेस्ट. Yes, session for tomorrow is at 11 a.m. Rohit. So if you guys want to join, you can join, or else I'll anyways give the communication to everybody. It's not that I'll give the communication to Saurabh and Rohit only. I'll mail it to everybody. If you are able to join it, it's okay. Otherwise, no problem. You can have a session on 14. ठीक है? I'm having a problem with like 3 sessions, last 3 sessions now. क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप एक काम कर सकती हो. So what you can do is, ठीक है. So what I can do is I'll just create a mock session only with you. If there is any error, I'll just contact the technical team from WebEx and ask them to solve your problem. And I will do this before 14. Will that be okay to you? Yes, sir. Yes, sir. So by say 7, create a mock session with you and forward the details to WebEx for debugging. Okay. Okay. So right now everybody has a storyline installed. Everybody has at least 3 weeks of licenses left in trial version, right? Yes, sir. Okay. No, sir. This is a sir. There's still some installation problem, and they've asked me to update my Windows. So I'll update it tomorrow. And then Okay, you are in Windows. Aditi, sir. आदिति, आपके पास कौन सा विंडोज वर्जन है? विंडोज 7 या 8? Windows 7. 7 है. अपग्रेड इट टू लेटेस्ट. ठीक है. If you want any troubleshooting regarding upgrading, you can ask me. Anyways, you can easily do it by contact. कंट्रोल बॉक्स में जाकर आराम से कर लीजिए. ठीक है. Everything, even if it is suggestive also, just do it. Just don't install that Bing desktop search. Other than that, आप सब कुछ उसको इंस्टॉल करके आप रेडी कर लो और उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करो. ठीक है. ओके. ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम. गुड नाइट. Okay, sir. Good night. Yes, sir. Thank you.